Assalamu alaikum all dear candidates. I hope you all are feeling very well and you are enjoying good health and prosperity. Wish you good luck for your future success. And today I'm going to teach you about a conversation. My topic is a conversation between a patient and a doctor. And you can improve your speaking skills by conversation also, and I ask some questions after lecture. So but it is a YouTube video, so that is why I'm going to upload a conversation between a doctor and a patient, and this video will be very helpful for you if you want to improve your speaking skills. I have provided my contact number right here, and if you are interested in learning English and if you want to improve your language skills, you may contact me. As you know that English is not our mother tongue, but you have to learn English language because it is a requirement. If you are living in Pakistan, then it is the requirement of our country that you have to learn English language. If you want to be successful, you have to learn English language. So linguistics is the scientific study of language. In English language, you have to improve your grammar, you have to improve your syntax, means that you should have a clear vision about the sentence structure. Your sentence should be correct. You should use sentence in a correct way. I have a very interesting conversation for you, and this conversation will be very helpful for you if you want to improve your speaking. I am teaching to the students of Australia, US, Lithuania and Jeddah. And these all students are learning in my online session. So if you are interested, you may contact me. My contact number is right here. So fluency is the main thing. You should speak English without making any mistake. And conversation between a doctor and patient about fever. As patient is suffering from fever, he is feeling temperature and sore throat, so that is why he has visited the doctor. Patient says, "Good morning, doctor." Doctor, "Good morning. You seem pale means आपका रंग जर्दी माइल हो रहा है, आपका रंग पीला हो रहा है. Your voice sounds different. और आपकी आवाज़ कितनी डिफरेंट लग रही है. Patient, "Yes doctor, I am having a temperature." Having भी कह सकते हैं, and you may say suffering. I am suffering from fever and even a sore throat. Sore means his throat is not well and he is suffering from as you know that जिस तरह होता है ना कि एक स्टिंग सी आती है गले से और एक सोजिश हो जाती है, तो कहता है कि मेरा गला ख़राब है. डॉक्टर, लेट मी चेक भी कह सकते हैं, लेट मी चेक भी कह सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर्स देन यू शुड से लेट मी चेक और लेट मी सी. डॉक्टर, you have a moderate fever. Moderate means दरमियाने दर्जे का. Let me check your temperature first. कि मुझे पहले अपना टेम्परेचर देखने दो कि तुम्हें बुखार है या नहीं है. Doctor uses a thermometer to check the temperature of a patient by snapping around one of the fingers. अब वो एक होता है ना, तरीका होता है, मेथड होता है डॉक्टर्स का, आपको पता होगा. वो थर्मोमीटर को ऐसे झटकते हैं और फिर फिंगर में लेकर ग्रिप लेकर वो पेशेंट के मुंह में डालते हैं. So patient, this thermometer is different from the one you used. आज का जो आप थर्मोमीटर यूज़ करें हैं ये पुराने वाले से काफ़ी चेंज है, ठीक है, क्योंकि अब डॉक्टर ने नए इक्विपमेंट्स रखे हैं अपने पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए. So that is why he said that this one is different from the previous one. So doctor, yes, this is introduced nearly by the medical supplies companies and it is much more comfortable, doesn't need cleaning after every use. क्योंकि अब ये मेडिकल कुछ हैं कंपनीज हैं और वो सप्लाई करती हैं. सो बेसिकली अब ये जो मेरे पास है कंफर्टेबल है और इसका जो यूज़ है मतलब इसे बार बार क्लीन नहीं करना. आपने अक्सर देखा होगा डॉक्टर्स जो है थर्मोमीटर यूज़ करते हैं नेक्स्ट पेशेंट पे अप्लाई करने से पहले उसको जो है क्लीन करते थे, बट अब ये न्यू काइंड का एक थर्मोमीटर है. यू डोंट नीड टू क्लीन इट अगेन एंड अगेन. You just have to use it. Means the latest technology or latest equipment. Next patient, that's really great.
डॉक्टर यस इट इज़. नाउ ही रिमूव द थर्मोमीटर. उसने उसका टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए थर्मोमीटर से चेक किया और फिर उसका जब थर्मोमीटर रिमूव किया कि मेजर करे कि इसको कितना फीवर है. So, doctor, temperature is not too high, around 99.8. Let me check your blood pressure as well. कहता है कि आपको इतना ज़्यादा बुखार नहीं है, 99.8 आपको बुखार है. मैं अब आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लेता हूँ. He then continues with measuring blood pressure और उसका ब्लड प्रेशर चेक करता है. डॉक्टर, your blood pressure is fine. आपका ब्लड प्रेशर तो ठीक है. Now he checks the throat. अब उसका गला एग्जामिन करता है. Now the doctor examined the throat of the patient. Doctor, it seems a bit scruffy. Scruffy means जिसमें से स्मेल आए और जो गंदा हो जाए. ठीक है, नॉट गुड. तुम्हारा गला ठीक नहीं है. Patient, yes, it has been quite bad. Doctor, do you sweat or and shiver? क्या तुम्हें स्वीट मतलब पसीना आता है, शिवर कपकपी होती है. Patient, not sweating. बट आई फील स्लाइटली कोल्ड व्हेन आई सिट अंडर अ फ़ैन. लेकिन हाँ, मुझे जब मैं पंखे के नीचे बैठता हूँ ना तो मुझे ठंड लगती है, ठंडक महसूस होती है. डॉक्टर, ओके, ये फ्यू साइंस भी कह सकते हैं, सिम्टम्स भी कह सकते हैं. सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. आई वुड रिकमेंड यू बिकॉज आई एम informing you about the vocabulary also in my this lecture. So I would recommend you undergo a blood test. मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लें. Nothing to worry about. In most cases the test come out to be negative. क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसे होता है कि जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ जाता है. It is just careful as there has been a spurt in malaria cases in the last month or so. कि अब तो मलेरिया के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और मलेरिया फैल रहा है. So that is why आप इस वजह से बीमार हैं. डॉक्टर, आई एम राइटिंग 3 medicines and syrup. मैं आपको 3 अद्वियात और 1 सिरप देता हूँ. The number of dots in front of each medicine names tells you how many times in a day you have to take them. और इनके ऊपर जो जितने भी डॉट लगे होंगे उस हिसाब से आपने मेडिसिन लेनी है. मीन्स अगर जिस मेडिसिन पे 2 डॉट हैं वो आपने 2 बार लेनी है, एक सुबह और एक रात. अगर 3 है तो आपने 3 टाइम्स लेनी है. For example, the 2 dots here mean you have to take it. में इसको आप you have पढ़ेंगे, you have के बजाय. ठीक है, if you want to learn English on advanced level then you have to pronounce it you have to take medicine twice in a day. आपको दिन में 2 बार मेडिसिन लेनी है, once in the morning and one after dinner. Doctor, do you have any other questions? Patient, no doctor, thank you. I hope you are enjoying learning. So stay connected and remember me in your prayers. If you want to join my speaking course then you may contact me. Take care of yourself. Allah Hafiz.